Good evening, everyone, and welcome everyone to another very informative session on Shiksha. I'm Bhagyashree Gupta, your moderator for this session. And firstly, I'd like to welcome our panelists who have been mentoring students and helping shape their career paths. So today we have with us Mr. Mohit Sharma, it's maths faculty from Plutus Academy with more than 6+ years of experience. Firstly, thank you so much for joining us on Shiksha's webinar. Thank you so much. Thank you, ma'am. And firstly, the topic, as we know, for today's webinar is how to prepare maths for SSC CGL exam. So I think we know that maths is a critical component for this particular exam. And I also feel that as a whole, a lot of students really think that maths is difficult. At least it was for me when I was studying. So I think maths is a subject that really gives you some fears and chills. And also I believe, sir, there are a lot of students who love solving complicated problems and they love maths. So I think there are both ways. Students like us who have been always feared of numbers and calculations, and they're always there, the brighter side, who are very happy to do maths. So I think today's seminar, this webinar is going to be very interesting because we'll be getting to know a lot of things about how to prepare for maths for SSC CGL exam that is happening and what all tips and tricks we can have. So, sir, we would like to start off with the maths syllabus. If you could elaborate on what are the highlights of the maths syllabus for this particular exam. 1 second. 1 second. Ji. Okay, meanwhile, sir is getting back with us and we'll start off with all the queries. So yes, please, I would request all of you, you could share your queries in a Q&A section. Vishal, if you can put your question in the Q&A session, please, we'll definitely, try and take up your questions over here. So don't worry. Okay, I think sir is back. Okay. Yes, sir, we could see your screen over here. तो मैम अब हम बात करते हैं, जैसे अपने पास एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने ही वाला है, अभी कोई बहुत ज्यादा समय उसमें बचा ही नहीं है। राइट। तो अभी एंड मोमेंट पे, ये मतलब एंड मोमेंट का भी एंड वाला पार्ट है, उस पे बस हम क्या कर सकते हैं, डेली मॉर्निंग और इवनिंग में बस हम मॉक लगा सकते हैं बस, क्योंकि 4 to 5 डेज में आप कभी भी तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मैथ का ना बहुत ही एक बड़ा रोल है और सिलेबस भी इसका उतना ही वास्ट है। टोटल 700 में से 250 मार्क्स का अकेला हमारे पास क्या आएगा, मैथ्स। 700 में से 250 मार्क्स का ओनली क्या आएगा हमारे पास, मैथ। और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसमें 50 आएगा प्री और 200 आएगा मेंस। तो 50 प्री वाला तो आप कैसे भी करके, थोड़ा मॉक्स की हेल्प से, थोड़ा प्रीवियस ईयर की हेल्प से आप फिर भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप मेंस वाले पार्ट पे पहुंचोगे तो यहां आपको जरूरत होगी, नीड होगी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की। अगर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तब आप क्वेश्चन बना पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को एट एनी कॉस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100% स्कोर कर सकते हैं। और 100% स्कोर कब कर सकते हैं, जब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप इंग्लिश की बात करोगे तो अगर कोई सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम, वन वर्ड हमारे पास आ गया जो हमें याद नहीं है, और वो कहीं से भी आ सकता है, तो फिर आप उस कंडीशन में 100% स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन मैथ में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डिफाइन है, आप वहां पर 100% स्कोर कर सकते हो। और 100% स्कोर करने के लिए आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो 100% क्लियर होने जरूरी हैं। तो इसमें मैथ में हमारे पास गेम आता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में अगर आप देखोगे, आपको मिनिमम 6 मंथ लग जाएंगे, मिनिमम 6 मंथ। अगर आप डेडिकेटेड स्टडी करोगे तो मिनिमम 6 मंथ्स आपको लगेंगे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो 6 मंथ्स में कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर।
और उसके बाद आपका हार्डवर्क, स्टूडेंट का प्रैक्टिस, कि वो कितनी जल्दी चीजों को ग्रैब कर पाता है, कितनी जल्दी चीजों को प्रैक्टिस करके आगे जाता है। तो मिनिमम 6 मंथ्स तो हमें चाहिए। प्रीलिम्स से कोई दिक्कत नहीं आती, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो एकदम डिफाइन है कि वो ही आना है हर बार। लेकिन मेंस में जाके कुछ भी डिफाइन नहीं होता। मेंस में आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, वरना प्री पास करोगे मेंस पे बाहर हो जाओगे। और अगर दोनों को ही क्लियर करना है एक साथ, तो स्टार्टिंग से ही अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते चलो, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। So, sir, also, if you could help them with like what all will be there in the particular syllabus, what all subjects they really need to focus on, while preparing for this exam. देखो मैम, हमारे पास 2 टाइप की मैथ होती है। फर्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक, और सेकंड है अपने पास एडवांस। हमारे पास ये 2 टाइप की मैथ है, अरिथमेटिक और एडवांस। अब ये जो अरिथमेटिक वाला गेम है ना, ये है आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि आप चीजों को जैसे समझ पाओगे वैसे ही आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे। अरिथमेटिक वाले पार्ट में आपको अलग से कुछ भी नहीं करना होता। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको रीड करो, समझो, इक्वेशन बनाओ, आंसर आ जाएगा। वो इक्वेशन कोई जल्दी बनाएगा, कोई थोड़ा लेट बनाएगा, वहां पे बस इतना फर्क पड़ता है। लेकिन अरिथमेटिक का जो गेम है वो केवल एक तरीके से आप ये समझ लो फोकस बेस है। अगर आपका फोकस क्वेश्चन पे है तो चीजें जल्दी समझ जाओगे, आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर दूसरी साइड आप एडवांस मैथ में चलोगे तो असली गेम एसएससी सीजीएल का जो असली गेम है वो इस एडवांस मैथ का है, क्योंकि इसमें ना कुछ भी लिखा हुआ कभी भी नहीं मिलता। यहाँ पे जरूरत पड़ती है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता, बस एक फिगर बना देंगे, पूछा जाएगा ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। तो उस फिगर के बारे में कंप्लीट नॉलेज जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये दोनों में डिफरेंस है। और अगर आप देखोगे ना तो एसएससी में 60% गेम एडवांस मैथ का है और ओनली 40% गेम अरिथमेटिक का है। और अगर स्टूडेंट्स ने इस 60% वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया ना, तो अरिथमेटिक तो वो अपने आप ही कर ले, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता, जरूरत है यहाँ पर। अगर ये 60% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ गई तो माइंड इतना शार्प हो जाता है कि अरिथमेटिक के साथ आप अपनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। तो हमारे पास इसमें भी अगर आप देखोगे एडवांस मैथ में एक सबसे वास्ट टॉपिक है ज्योमेट्री। अगर आप अकेले ज्योमेट्री को ही, मतलब मैं अपना ही बताता हूं, मैं जिन स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री पढ़ाता हूं, मुझे कम से कम 100 आवर्स चाहिए अकेले ज्योमेट्री के लिए। अकेले एक ज्योमेट्री के लिए 100 आवर्स चाहिए। इस 100 में भी 60 आवर्स की होगी उनकी थ्योरी। Sir, sorry to interrupt. There are a few students from South who are having a bit problem in understanding Hindi. Can we like keep it a mixed of both? मैम मेरे को हिंदी ज्यादा सुटेबल है। I do understand, sir. A bit of English for them also, please. They are having a bit of understanding problem with Hindi. ओके मैम, ट्राई करते हैं। Right, right. Bilkul. I'll request all the students. We are trying to keep as much we can. So don't worry on that, right? Okay, sir. You can continue, sir. All right. Meanwhile, sir is getting back. तो मैम I could हमारे see your messages, all of you, Shirisha, Goli. I could see your messages. We are trying to keep it both for all of you. So please do not worry about it. Yes, sir. Please. तो हम 60 आवर्स में कंप्लीट करते हैं इसकी थ्योरी एंड 40 आवर्स
4 क्वेश्चंस। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर ज्योमेट्री को कितना टाइम चाहिए? 100 आवर्स। सेम इसके बाद अलजेब्रा, मिनिमम 80 आवर्स, कंप्लीट थ्योरी विथ कंप्लीट क्वेश्चंस, 80 आवर्स minimum required for algebra. And next, trigo, minimum 60 hours with complete theory and complete question. So इसी टाइप से अगर हम algebra को देखेंगे, एडवांस मैथ को, तो एडवांस मैथ का टोटल टाइम बनेगा अपने पास अप्रोक्स 300 आवर्स, अप्रोक्स 300 आवर्स ओनली फॉर एडवांस मैथ। और इसी में अगर आप अर्थमेटिक को देखोगे तो ये होगा ओनली 100 to 150 आवर्स। क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, तो आपको इतना करना पड़ेगा फॉर एसएससी सीजीएल। Sir, are we done with this presentation? Yes, ma'am. Okay, great. So I think you can stop sharing the screen and we'll move to some other questions, sir. Okay. Right. So I think what sir has explained now is all about the entire syllabus, what all the systematic format of syllabus is for maths SSC CGL. So I think this will help all of you to understand what kind of topics and how you need to cater and how you need to study for the entire syllabus of the Tier-1 exam that is happening soon, right? Okay, so syllabus and books refer. Okay, sir, we are having queries from students regarding like syllabus we already discussed. If you would like to refer any particular books, that students can refer to. I think Aishwarya has this question, Parikshit has this question. So, sir, Kiran, previous year. So this is Kiran. Kiran Previous year. Okay. Kiran previous year. Okay. Sir, any other books that they might refer? मैम मैं तो अपने स्टूडेंट्स को अपनी पीडीएफ कराता हूँ। ये तो मैं अगर कोई स्टूडेंट बुक के लिए बोलेगा तो हम ओनली उसको प्रिफर करते हैं कि भाई किसी को अगर लेनी है तो आप किरण ले सकते हो। अदरवाइज अगर मैं अपना बोलूँ तो मोर देन 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैंने अपनी खुद की नोट्स बनाए हुए हैं। आप उन नोट्स को पढ़ो, ओनली पेपर देने जाओ, 100%, 200 आउट ऑफ 200। Right. Okay. So, so I think sir has just mentioned a book like Kiran previous year that all of you can refer. And regarding the entire subject material, so since sir is from a student, from a faculty, from a academy, so he has his own notes. So you can always connect with me after the webinar and I could help you connect with sir if you need some help or if you want to connect with him personally. So we can always share that, right? Okay. Let's move to some other points that we have. Sir, if we talk about the highest weightage, like out of all the topics, which topic, sir, has the highest weightage that students should not absolutely miss, that they have to do? 4 topics. First is geometry. Second is algebra. Third is trigo. And fourth is number system. अगर प्री की बात करते हैं तो 25 में से आउट ऑफ 25 अप्रोक्स 13 क्वेश्चंस
फ्रॉम दीज 4 चैप्टर्स। और इसी में अगर हम मेंस की बात करें तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 4 चैप्टर्स। So, sir, out of 4 of these 4 are very important for the entire syllabus, right? Most important. Most important, right? So, I think sir has mentioned over here in the screen the 4 topics that all of you need to thoroughly know, and you should not absolutely give it a miss, because these are the most scoring ones. All right, sir, I have a question from a student regarding trigonometry, and he wants to know, what is the easy method of learning trigonometry? How can they, they get easy and it does not get tough for them while preparing? Only बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तो एडवांस मैथ, ये 4 चैप्टर्स चारों ही एडवांस मैथ के हैं, और एडवांस मैथ ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ओनली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको चीजें पता है कि ट्रिगो बनी कैसे, ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप चीजें आसानी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। लेकिन अगर बुक्स को रेफर करके उनको लर्न करोगे तो फिर वो कोई भी बेनिफिट उसको आपको नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, बेसिक्स, वर्क ऑन बेसिक्स। Right. I think that very well answers. If you want to understand how you need to prepare, then basics has to be clear. That is what Sarah said, that your basics, if your basics are clear, I think, sir, that solves half your problems, because you know the base and you can solve 90%. Right. 90%. Right. I totally agree. Okay. Vishal, yes, I have seen your question. I'll definitely put your question. Please do not worry. Okay. Sir, Vishal has a question. How they can do fast revision for mathematics for SSC CGL? फास्ट रिवीजन, Yes, sir. हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस डेली करो। जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास परसेंटेज, फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज के फर्स्ट 50 क्वेश्चन करो, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चन, प्लस सीआई के 50 क्वेश्चन, प्लस एसआई के 50 क्वेश्चन। ऐसे ही करके जितने भी चैप्टर अरिथमेटिक के हैं सबके डेली 50-50 क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो हमारे चैप्टर्स भी सब रेगुलर रिवाइज होंगे, और विद इन 1 वीक पूरी अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगी अगर हर एक चैप्टर को आप साथ लेकर चलोगे। और स्पीड के लिए, फॉर स्पीड, टेबल्स, स्क्वायर्स, टेबल्स 1 to 20, स्क्वायर्स 1 to 99, क्यूब्स 1 to 27, minimum requirement for calculation. Okay, so I think this would be like for last minute preparation, this would be the entire format that all the students need to follow if you have to do fast revision for mathematics. So I think sir has mentioned on screen how you can do quick revision before the exam, and you really need to focus on these important things that is written on the screen. So all of you, I think, can see the screen. So please make a note down of all these things that will help you understand how to do fast revision and how to clear out things, right? Okay. So I'll just pick another question from Swarna Prabha. Sir, Swarna Prabha wants to know how to prepare number system, like the main contents. नंबर सिस्टम, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही, किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। जितने कॉन्सेप्ट पूरी मैथ में मिलाकर हैं, अप्रोक्स मैथ में 14 चैप्टर है, 15, जितने कॉन्सेप्ट 15 चैप्टर्स में मिलाकर हैं उतने अकेले नंबर सिस्टम में, अकेले नंबर सिस्टम। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट इसका चैप्टर का हो ही नहीं सकता। नंबर सिस्टम क्या है? नो अबाउट द नंबर्स, नंबर्स का तो कोई एंड ही नहीं है।
लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कुछ बुक्स है, अगर आप कहीं पर कोचिंग कर रहे हो तो उन सर ने जो भी नोट्स दिए हैं उसी को रीड करो। अगर आप कहीं भी कोचिंग नहीं कर रहे, सर्वेश कुमार, क्वांटम कैट, आप इसको रीड कर सकते हो। So I think all of you can see the screen what sir has shared. So regarding the number system, he has shared a book. You can actually check on these. That will help you understand more of number system, as sir has already mentioned, right? Okay. So I would go to some other questions. Suraj has a question, sir. He says he is having trouble in finding out the square root and cube root of numbers like 30 is to 2500, 5 root over 761.24. If possible, can you please tell me an easy way of solving square roots and cube roots? जब इस बुक को आप रीड करोगे ना सर्वेश कुमार को, तो इसमें हमारे पास ये जो आप मेथड बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको ये सारे मेथड मिलेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, चीजें क्या हैं, चीजें कैसे बनी, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसा आएगा, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसा आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। मैथ की चीजों को आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि भाई किसी ने कुछ दे दिया उसको करके बता दो। अगर उसको पूरा समझना है ना, तो इस बुक को आप पकड़ो, इसमें आपको चैप्टर मिलेगा, जब आप अंदर जाओगे परफेक्ट और नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो वहां से आप सीखो, आपको समझ आएगा। Right. So I think for square roots, Suraj, I think you got your answer. For square roots and finding out cube roots, I think sir has already mentioned a book here. So I would request, please make a note down of these book names. Get hold of this book and go through the entire book to get all your answers. Okay, I see a lot of students who are raising hands. So I would request all of you, please, instead of raising hands, please put your queries in our Q&A section. I will definitely take your question from sir. So I would request, please, instead of raising hand, please put your question in Q&A. Sir is here to help you out. So if you put here, I'll definitely take your question to sir. Right? Okay. Rajdeep says, sir, my maths is too weak. Like, unka weak hai maths काफी ज़्यादा. So what will you like to suggest, Rajdeep? मैथ्स वीक है इसका मतलब यह है आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट आपको खुद से अपना डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप कैसे होगा? या तो आप जहां भी आप हो वहां किसी टीचर को आप जाओ, उनके पास मैथ सीखो, या फिर आप एनसीईआरटीज पढ़ो, बेसिक बुक्स। इंटरेस्ट डेवलप होगा जब आप बेसिक चीजें पढ़ना स्टार्ट करोगे। सबसे फर्स्ट बेसिक पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं ज्योमेट्री का, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, लेकिन 99% स्टूडेंट्स को यही नहीं पता क्यों होगा। तो उस सिचुएशन में कहां से इंटरेस्ट बनेगा? तो चीजों का फाइंड आउट करो। देखो, कोई भी चीज अगर हमारे पास है, कोई भी इवेंट अगर है, तो वो क्यों है और वही क्यों है। Right. बस। So, since we spoke about students getting weak in maths, and as you mentioned that since you don't have an interest, that is why you're weak. So, is there a trick or a strategy that students can build and find that interest and overlook that weakness in maths? Join the Plutus Academy. Okay, that was a clever answer by sir. Okay, I'll just move to some other questions. Sir, during registration for this webinar, we got a lot of questions from students. There were a few who were very new to this exam, or like sitting for the first time probably. And they were a bit confused about the format of the exam. Like when they're sitting for the exam, how should they divide the timings for, completing the entire paper, especially if we talk about maths? We have 4 parts: reasoning, English, reasoning के बाद GS।
मैथ्स एंड इंग्लिश। तो इसमें से अगर टाइम टेकिंग की अगर आप बात करो, ओनली मैथ, टाइम टेकिंग ओनली मैथ, इंग्लिश को अगर हमें टाइम देना है ओनली 7 to 8 मिनट्स ओनली। कुछ सॉल्व करने के लिए हमारे पास नहीं है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। फॉर जीएस ओनली 4 मिनट्स, फॉर रीजनिंग 10 to 12 मिनट्स। रिमेनिंग टाइम, जितना भी रिमेनिंग टाइम है वो सब होगा मैथ के लिए, क्योंकि ये कैलकुलेटिव सेक्शन है, यहां आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो अदर सेक्शन से जितना टाइम सेव होगा उतना मैथ में आप मैक्सिमम टाइम दे पाओगे। So, since some of you might be sitting for the first time for this SSC exam, so sir has already shown how you need to divide amidst all the 4 sections, how much time you need to give for each so that you don't waste time and you're able to complete the entire exam in time. That is the main objective, that you should complete your exams in time, right? So please understand this format and divide your time accordingly while you're appearing for the exam. Okay. Sir, I have another question from Vara Lakshmi, and she wants to know if you could refer certain books for quantitative aptitude. Kiran, previous year. Okay. So Vara Lakshmi, I think you got your answer. Sir has already mentioned here, Kiran, previous year, you could refer this book for quantitative aptitude, right? And I would request, please put your queries in our Q&A section and not in the chat, please. Okay, I'll move to some other questions that we had regarding this exam. Sir, is there any source of practice for maths questions, especially for SSC CGL? I mean, is there any mock test that they can take before and get practice to it? किरण प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बुक ही है, जो किरण प्रीवियस ईयर है ये प्रैक्टिस बुक ही है। इसके बाद और कोई प्रैक्टिस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, so that one book is sufficient for you to practice, right? Okay, so I think all of you, if you're sitting for the exam, you should definitely get hold of this book and understand what exactly this book has. So this is a very important book, and I'm sure that all of you had made a note of this particular book, right? Okay, sir, I'll move to some other questions that students have put. Talking about once the student is sitting for the exam an hour before, so sir, what exactly mental preparation does the student needs to have before sitting for the exam? Like some hour before, 1 hour before he's there, he's preparing to sit for the exam. So is any kind of mental preparation that also that the students need to have? No ma'am, no, कोई preparation की जरूरत नहीं है, chill mode. Okay, so you just need to relax and sit for your exams and give your exam calmly. So that is what sir is suggesting. You do not need to take tension and stress, because that will just hamper your thing. Okay, sir, I have another very interesting question. A student says that I am doing a lot of silly mistakes during solving a problem. So can sir suggest something so that I should avoid doing these silly mistakes? Mock, ज़्यादा से ज़्यादा mock और उसका analysis. बस one stop solutions for silly mistakes. ज़्यादा से ज़्यादा mock और उसका analysis. Right. So I think more of practice will help you understand and make you perfect. And I think that will help reduce the kind of silly mistakes that you will do, the number of silly mistakes. So that is for sure that practice. I think maths is all about practice, sir. Yes. There's nothing you can memorize and do. I think only practice is there that will help you score high. Concept clarity plus practice equals to math. 100% score. Absolutely. And because it is the only subject where you can score 100 out of 100. So I think 100 out of 100. You should give it a try for this. Right. Okay. Varalakshmi has another question. What is the crucial weightage topics for quant in special reference to this exam? मैम अब ऐसे तो सभी का वेटेज है, ऐसा आप किसी को नहीं छोड़ सकते. So Varalakshmi, I think sir is saying that you need to give importance to all the subjects. You cannot specially have any special weightage for quant.
in special reference to this particular exam. So all the subjects, all the topics are equally important. So you need to know all of, right? Okay. Bhavya has a question, sir. How to start class 10 maths for session 2022 to 23? I mean, if he's sitting for this exam, so how should she start for class 10th maths while preparing? Class 10th math for SSC. Right, sir. नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद से एनसीईआरटी को पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। आप कहीं पे कोचिंग वगैरह ज्वाइन करोगे, वो टीचर है वो आपको पहले से ही वहां से चीजें बताएंगे, बस इतना पढ़ना है, ये छोड़ना है। तो खुद से टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी आप जहां भी हो वहां कोई कोचिंग ज्वाइन करो, वो टीचर आपको जो भी मटेरियल देते हैं उसको रीड करो। सिंपली खुद से फिल्टर करने की कोशिश मतलब नहीं करनी चीजों को। Right. So I think sir has actually answered very well. Please do not filter out anything. Whatever you have been told to prepare, please stick to that, because that is the most important thing, right? Okay. Sir, we have another question from Dharmesh Mishra, and he says there are 35 questions that they need to complete in 20 minutes. So, sir, what is the correct approach to attempt all the questions? For banking, 35 questions for banking. Sir, he is saying that there are 35 questions that you need to do in 20 minutes. So how should they like approach all these together? Like, first, inequality. Second is simplification. Third is approximation. Fourth is some easy arithmetic question. Some easy arithmetic question. And last step is DI. Best approach for banking students. okay. So I think sir has explained how they need to approach and what all you need to understand. So please make a note of these things, because these are very crucial tricks that you need to understand while you're preparing for the exam. Okay. Vishal says, sir, actually my problem is when I solve offline test, my score is good, but when I give online test, my score is very low. Sir, please guide on this. Due to pressure. मतलब अगर किसी को कुछ नहीं आता तो ऑफलाइन में भी स्कोर नहीं आएगा। प्रेशर मॉक देते देते प्रेशर हैंडल हो जाएगा। मैक्सिमम ऑनलाइन स्कोर मॉक दो, मैक्सिमम स्कोर आप मॉक आप ऑनलाइन दो, प्रेशर कम हो जाएगा, स्कोर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। Right. So Vishal, I think you heard what sir said. So please understand this thing and do not take so much of pressure on yourself. All right. Coming to some other questions, sir. If someone is asking, I'm in class 12 CBSE, and despite my hard work, I couldn't do well in my term 1 exam. And June 7th is his second term exam. So is there any advice that you would like to give? मैम क्लास 12th का भी बहुत समय हो गया पढ़ाई में, उसका भी कोई आइडिया नहीं। All right. Okay. So there's another very interesting question. So someone says that, so how to find out if there is a tricky question, if there is a trap question kind of thing. So how do we find out, and we should not attempt that question if it's very tricky? जब आप क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जो भी सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव हो लीव छोड़ दो। एक क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा ना हो एक क्वेश्चन की वजह से आपने आगे 4 इजी क्वेश्चन छोड़ दिए। Right. So I think sir is absolutely right. If you find any tricky question or any question like that, so as sir says is very right, that you should avoid that question and work for other which you already know, because you will be wasting time after that. And I think that does not make sense. So according to sir,
you should always opt doing first that you know and you're very sure, rather than going after some questions which is difficult and you find some tricky questions in there, right? Okay. Okay, I'll take another question I got here. A student wants to know about briefly about algebra. I mean, he has a lot of doubts in algebra part. So he wants to know how to, go ahead for algebra. Basics. Advanced math totally depend on basic. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ. Right, sir. What is the square of a plus b? सिंपली a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. क्यों? वाई. यही क्यों होगा? एडवांस मैथ के किसी भी चैप्टर को अप्रोच करने का, क्वेश्चंस को टैकल करने का एक ही मेथड, वाई. ऐसा क्यों होगा? ये चीजें बस स्टूडेंट्स को क्लियर करनी है. तो ये चीजें समझनी है ना, इससे चीजें क्लियर होंगी. अब ये सबसे बेसिक बातें हैं जो स्टैंडर्ड 6 से आना स्टार्ट हो जाती हैं. अब ये ही नहीं पता होता स्टूडेंट्स को, तो फिर आगे दिक्कत इसलिए आती है. Right. So I think since you had a query regarding algebra, so as sir has rightly mentioned that your basics should be very clear. If your basics are clear, you can excel in any part of the maths. So you do not need to worry on that. You should have your concepts clear and your basics should be clear, right? So that will work in your favor once you sit for the exam. Okay, right. Thank you, sir, for that answer. I will move to some other questions that students have put. Sir, is there, while like sitting for this particular exam, is there something like this that minimum these many questions they need to answer to pass in that exam? Minimum for journal, minimum 70 questions for journal. Okay. So, is there anything like for maths section also separately, like minimum itna for maths, then only you like go ahead? इसमें होगा रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश एंड मैथ्स. रीजनिंग्स में हम करने 25 में से अप्रोक्स 22, इंग्लिश में 25, सॉरी इंग्लिश में 25, मैथ में अप्रोक्स 20 और रिमेनिंग जो भी बचे जीएस में. Okay, so I think sir has explained here, like for minimum questions that while you need to attend for passing this exam, sir has explained here. So minimum 70 questions in total you need to attend during the exams, and for individually also sir has already mentioned how many each need to answer, whether it is for reasoning, whether it's for English or it's for maths. So you need to understand the division of questions and the minimum number of questions that you need to answer here to get hold of, right? Sir, moving to some other questions that I think that's a common question that a lot of students have given here is like, is there any a trick or a strategy that they should follow to complete the syllabus in short period of time and answer the questions correctly? Is there any tips or tricks that you want to share with students? नो मैम, शॉर्ट की कोई ट्रिक नहीं है. अगर चीजें शॉर्ट में होंगी तो सिलेबस मिस होगा, सिलेबस मिस होगा तो अपने आप ही फेल होगा. तो शॉर्ट की कोई ट्रिक नहीं है, बस ये है एंड मोमेंट पर जितना करा है उसका रिवीजन अच्छा से कर लो. मैथ में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है. So, sir, should they make any time plan or any study time plan that they need to follow, particularly for all subjects before sitting for the exam, like a last moment revision kind of time plan? लास्ट मोमेंट में मैक्सिमम टाइम मॉक को देना है, मैक्सिमम टाइम मॉक, क्योंकि अब तक स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को जो भी करना है वो हो गया सब. अब कुछ 4-5 दिन में कुछ ऐसा नया नहीं सीख जाएगा कि उसका एग्जाम एकदम से स्कोर उसका बूस्ट अप हो जाए, एग्जाम क्रैक हो जाए. अब तो बस आप इतना कर सकते हो, जो हो गया वो गलत ना हो बस.
as sir is mentioning that since the time is less and the exams date are nearby, so you should have to have a proper revision of mock papers. So you should try and solve more of mock papers, because sir is saying that last moment these are the only thing that will help you score well in SSC exam. So last moment revisions only includes solving mock test papers that will help you understand better and give you a more clarity. Okay, Surya Vamshi, we have already discussed about the syllabus in starting of the video. So once you watch the entire video, you will get to know what exactly is there in the syllabus. So please watch the entire video, right? So you could check on that. Okay. Sir, once they are done with the Tier-1 exam, then they'll be moving to the next one. So is there any special preparation for that also that they need to follow after this? No मैम, कोई नहीं, सिलेबस सब सेम है, बस सिलेबस सब सेम है. तब मॉक बस आपके लिए सब्जेक्ट दो हो जाएंगे, मैथ्स एंड इंग्लिश. डेली 1 मॉक मैथ एंड 1 मॉक इंग्लिश आफ्टर प्री. ओके, सिलेबस सेम है, प्री में भी वही है, मेंस में भी सेम है, तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना. Okay, and sir, how many times can students attempt for this exam? Is there any particular number that they can attempt? सॉरी मैम, फिर से रिपीट. How many times can they attempt to sit for this exams? नो मैम, जब तक एज है तब तक कोई Is there लिमिट any नहीं है. age limit also, sir, that they have? एज लिमिट फॉर जर्नल 21 to 30. Okay. Okay. So I think till this age limit, they can sit as many times they want to have. Yes, And sir, I've also seen a lot of students, they drop a year or they take a gap and they prepare for this exam and then they sit for the exam. So sir, according to you, is that advisable if they're taking a drop or missing some important exam in between and sitting for the exam? मैम बिल्कुल, अगर आप को अंदर है कि हाँ भाई कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ड्रॉप कर सकते हो. मैंने भी करा. Okay. तो कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ड्रॉप तभी करना है जब हाँ खुद से हो कि हाँ करना है. So sir, how was your whole experience? If you could like briefly share a bit about your experience with them. बेस्ट मैम, बेस्ट. So I mean, while you were preparing, how was your entire thing, especially? I mean, while you were studying and preparing for these things. मैम मेरे पास दो ही चॉइस थी, या तो स्कूल में जाके टीचर बने या फिर इस सेक्टर को चुने, थोड़ा आगे बढ़े. Right. और उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट थी चीजें, तो मैंने इसी को चुना, इसी को मैंने सेलेक्ट करा कि चीजें करते हैं. इसी को करते करते साथ में मैंने अपनी MSc मैथमेटिक्स भी करी. Wow. Okay. तो चीजें सब होती चली गई और आज मैं उस डिसीजन से सेटिस्फाई हूँ कि हाँ उस टाइम डिसीजन करेक्ट था. Right. So, sir, like if we talk about since you have done MSc also and you're teaching also students and preparing them, the aspiring students. If I talk about opportunities, because I saw a question a student had that what are the opportunities that maths hold for a student in future? I mean, if they're going studying about this maths and taking up higher studies also. So what opportunities or new doors maths open for a student as a career? मैम एज ए करियर मैथ्स वन एंड ओनली ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह आएगा. प्ले स्कूल से लेकर और PhD तक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी जगह आएगा. आपको इस टाइम पीरियड के बीच में आप कोई भी एग्जाम दो, कोई भी कहीं पे भी आप क्लास स्टार्ट करो, कुछ भी आप करो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी जगह आएगा. तो एज ए करियर मैथ इज बेस्ट सब्जेक्ट. Right, absolutely. I totally agree, because I could see a lot of students who go into research and PhDs and a lot of things that they are taking ahead in maths. Okay, so before we move towards wrapping up the session, I think all of you could see a feedback poll right now in front of your screen. So please fill up the form. This is a very important feedback form that we get from you, as in how much you liked the session, what all you want to improve, and what all topics you want us to do in future, what all sessions, what all
webinars you want to see ahead. So we would like you to please fill up the feedback form. Was the session useful to you, and how likely would you like to recommend the session, right? Okay, yes, before ending the session, we would suggest all round topics briefly. Definitely do not worry. Before we end the session, I would request sir to briefly, round up of the topics, right? Okay, so sir, before we end the session, students are requesting that if you could like give them a brief roundup of the topics and all the the entire syllabus thing. Okay. These are branch of mathematics. First arithmetic, second algebra, and third is geometry. Geometry is high weightage topic. देखो आप ज्योमेट्री के अंदर 2D, 3D, trigonometry, height and distance, coordinate geometry. These chapters totally depend on geometry. अगर ज्योमेट्री के बेसिक्स क्लियर हैं, अगर ज्योमेट्री के बेसिक्स क्लियर हैं, तो इन चैप्टर्स में कोई आपको एक पॉइंट पे भी दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन अगर ज्योमेट्री के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो इन चैप्टर्स का आप कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे. सेम एल्जेब्रा. एल्जेब्रा सेल्फ डिपेंडेंट चैप्टर है. एल्जेब्रा इज सेल्फ डिपेंडेंट चैप्टर. कभी भी आप इसको उठाओ, कभी भी रिवाइज कर लो, एल्जेब्रा हमेशा कर सकते हो. लेकिन अगर आपको इन चैप्टर्स को करना है 1 2 3 4, इन 4 चैप्टर्स को आप करना है, तो ऑलवेज इनसे पहले आपको ज्योमेट्री को करना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर द सन ऑफ ज्योमेट्री. उसके बाद अर्थमेटिक. अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, इंस्टॉलमेंट्स, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट, रेस, एवरेज. These chapters are in arithmetic, and these 4 chapters are in geometry. और इसमें से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो 60% गेम ओनली इन 4 चैप्टर्स का है. एंड ये जितने भी चैप्टर्स अपने पास हैं, इनका वेटेज ओनली 40%. तो मेरा सजेशन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद एडवांस मैथ, क्योंकि सिलेक्शन होना या नहीं होना टोटली डिपेंड ऑन एडवांस मैथ, टोटली डिपेंड ऑन एडवांस मैथ. Right. So thank you, sir, for briefing out the entire structure. So I think all of you can see the screens. Like a lot of you wanted to know about the brief
roundup of the subjects for mathematics. So sir has clearly mentioned here in a chart form, like how you need to divide, what all the topics are, and how you need to, prepare for these. So we tried covering all your questions during the entire session, but if somehow you did miss the session, so you could watch the entire video on our official YouTube channel. I've already shared the link here in the chat section. So you can subscribe our official YouTube channel and watch the entire video if you have missed that somehow. But if any of your queries remain left out, you can always come up to ask.shiksha.com and put your queries there. So there'll be experts and panelists who will be there to guide you and solve your answers. So please make good use of these links. And if you still find any queries, you can always come back to us and we can try and connect with, with the experts, right? So I think, sir, before winding up, one last advice for the students who will be sitting for the exam. Mock test, mocks, and revision. Right. So thank you for your valuable time and all the valuable inputs that you have shared here with the students. I think that will really help them to work for the last moment revision and sit for the exam. And I think mathematics, the tips and hacks that you were looking for, sir has shared that in a very brief way, that how you can work on your maths and score really good for this exam. So please make good use of these points and the information that sir has already shared with you all. And I wish all the students all the very best ahead for the exam. And thank you so much to all of you for joining us here. Thank you, sir, so much for sharing your time with us. Welcome.